Good morning to all of you. In last class, we were discussing Sikh power in India, right? And good morning, good morning. Am I audible? Okay. Okay. So, in last class, we have started the discussion about the Sikh power in India, and we have discussed some basics here. That Sikh religion in India was basically a byproduct of Bhakti Sufi movement, right? And Bhakti Sufi movement was, you can say that it was a kind of movement which promoted the socio-religious reforms in India in the medieval age, right? So in ancient time, the socio-religious reforms was in the form of new religions, especially in the form of Buddhism, especially in the form of Jainism. And here in medieval India, we see it's in the form of Bhakti and Sufi movement. And in modern India, we will later discuss a topic that is 19th century socio-religious reforms in India. So that's a topic in modern Indian history. And here we were discussing Sikh power. Okay, so I have discussed with you that Guru Nanak was the founder. Okay, and this religion was founded in 15th century. And in 15th century onwards, what we see is that from 1526 onwards, there was Mughal rule in India, right? It means that there were Sikh gurus. The list of Sikh gurus were 10. We discussed also the names of these Sikh gurus in our last class, right? The number of Sikh gurus were 10. Okay, so there was a tradition of gurus. Okay, now the names were like Naara, the codes I have already discussed with you. Then 3H, Naara means what? Guru Nanak, Angad, Amar Das, then Ramdas and Arjan Dev. Last class में discuss किया था इस trick को. So we need to know the names and the chronological order of these gurus. That can ask in your prelims exam. That is a very simple question, but this can be a prelims question. That 10 gurus, arrange the name of gurus in chronological order. This can be a prelims question. Okay, so simply remember the names here. Like the first was Naara, like I discussed in the last class, that is Nanak. Okay, A stands for Angad, then Amardas, Nanak, Guru Nanak, Angad. This is Amardas, Angad, then this is Amardas, right? R stands for Ramdas, Guru Ramdas, right? And stay A stands for, okay, Guru Arjan Dev. So Arjan Dev was the fifth Guru of Sikh. Arjan Dev, that's an important name. Nanak was the founder. Okay, so chronological order is important. So this is again in chronological order. Then the second part was 3H. I have discussed with you 3H. What is the meaning of this 3H? The names. Okay, so first H means Har Govind, then Har Rai, then Har Kisan. Guru Har Govind, then the next name was Har Rai, and the third name was Har Kishan. Okay, and then the third was, okay, TG, Guru Tegh Bahadur, and the next is TG. These two are the most famous. One is Guru Tegh Bahadur and Guru Govind Singh, right? These two names, Guru Tegh Bahadur and Guru Govind Singh. Guru Tegh Bahadur and Guru Govind Singh. Okay, read these names. Chronological order was important. Okay, so where there is a prelims question, and if it's such kind of question where it's fact based, so instead of remembering the facts, what we should do, we should make some trick, and then we can easily recall it in the examination hall. Now, there was a very important reference about this Guru, Guru Arjan Dev.
And what is the reference here? Okay, so the reference is conflict with Jahangir. That's an important point. Okay, that's a very important reference. Read this: conflict with Jahangir. Conflict with Jahangir. Okay, so Jahangir was a ruler who ruled during this time period. You all know this: 1605 AD to 1627 AD. Yes, this was the time period of, okay, Jahangir, 1605 to 1627. And when Jahangir was ruling, जिनके साथ मैंने medieval डिस्कस किया वो जानते हैं, when Jahangir was ruling, there was succession disputes among his sons. पता है? So one of his son went to Guru Arjan Dev, and Guru Arjan Dev blessed him that you will get success. And now Jahangir is very angry. ठीक है, आमतौर पे वो एंग्री होने वाला आदमी नहीं था, but he is very angry. What he did? Okay, he called Guru Arjan Dev. Okay, and then, okay, he punished. He asked him that you must ask for pardon, and you will not only ask for pardon. Okay, if you will not do this, then what will happen? Okay, I will execute you. And the same he did. Okay, so he executed Guru Arjan Dev in the very next year of his rule. 1606 AD में ही क्या कर दिया? Execute कर दिया. He executed or murdered, tortured and killed or murdered Guru Arjan Dev. Okay, now this is what? Mistake of Aurangzeb. ये क्या है? Mistake of Aurangzeb. Why I am calling it, sorry, mistake of Jahangir. This is what? Mistake of Jahangir. Why it's a mistake of Jahangir? Why it should be considered as a mistake of Jahangir? Because at this time, okay, Sikh religion was popular. It was becoming popular among the masses, right? This religion was now being consolidated. ये consolidate हो रहा था. Its popularity was increasing. Since it was preaching the idea of equality, so it was very much popular among the lower class peasantry and the lower classes, so-called lower classes at the time. So it was very much popular among these people, and they were having great sense of respect for their gurus. Okay, and now you have executed Mughal Guru. What will happen? The Sikh, which is an organized community, will fight a relentless war against the Mughal emperors. So this is the time from here what we see that the conflict with the Mughal rulers started. So write this point. This point is very important. That from this point, it means from 1606 onwards, from 1606 onwards, the Sikh, read this, Sikh people or Sikh groups will fight a continuous war. They will fight a continuous war, relentless war with Mughal emperor. They will fight continuous war or relentless war with Mughal emperors. Okay, continuous wars and relentless war with Mughal emperors. Okay, it means conflict started, but the most intense conflict or the serious conflict was seen at the times of Aurangzeb. Write this point. But the most serious conflict or the intense conflict was seen at the time of this ruler. The name of this ruler is Aurangzeb. Here what we see, most serious and intense conflict. Most serious and intense conflict was seen. And this is the time period of Aurangzeb's rule, 1658 to 1707 AD. Okay, the most serious and intense conflict was seen. Okay, now we all have studied about Aurangzeb previously also, that Aurangzeb reversed the policies of his predecessors, and that was a kind of great mistake. So Sikh religion was founded in 15th century, and when Aurangzeb is ruling, this is which century? This is later half of
17th century, later half of 17th century. Sikh religion was found in 15th century. Okay, so we can say that almost 2 centuries have passed. It means that now Sikhs were more organized. The popularity of Sikh, it means Sikhs were the more consolidated groups. Now Aurangzeb thought that if Sikh gurus will be converted to Islam, or if they will accept Islam, what will happen? His followers will also accept Islam, and in this way they will support the presence of Muslim rule in India. मेरी बात समझ गया ना? Because this was a general problem that there was a Muslim rule and the majority class of population, that was Hindus, were opposing this. And Sikh religion, Sikh people were considering themselves as a part of Hindu religion also. वो Hindu religion से ही associate करके देखते. Now what we see is that when Aurangzeb was ruling, you all know this, that Aurangzeb's time period is divided into two phases. One was 1658 to 1681, पहले बता चुका हूँ. Phase 1, जिन्होंने भी AMC पढ़ा है they know this, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बाद में पढ़ेंगे. 1681 to 1707 AD, this was phase 2. There were two phases. Okay, and why I have divided these phases? Because in first phase Aurangzeb's administrative policies were focused in the north, and in the second phase his administrative policies were focused in the south. Okay, this is the basic reason that first phase में पूरा का पूरा focus कहाँ है? नॉर्थ में, और सेकेंड फेज में पूरा का पूरा फोकस कहाँ है? साउथ में. ओके, तो फर्स्ट फेज फोकस्ड इन नॉर्थ एंड सेकेंड फेज फोकस्ड इन साउथ. नाउ सिख रिलीजन वाज पॉपुलर इन विच पार्ट? नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट? नॉर्थ पार्ट, पंजाब एंड नियर बाई टेरिटरीज. सो ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट द सिख issue, so Sikh were popular in Punjab and nearby region. Punjab and nearby region, it means they were consolidated in north region. North में consolidated थे. Now what will happen? Aurangzeb, okay, will invite this guru. The name of this guru is Guru Tegh Bahadur, and this was the fifth guru of the Sikh, na? Guru Arjan Dev. Now Guru Tegh Bahadur was the ninth guru. देखो, sequence is very clear. 1, 2, 3, 4. This is fifth guru. Then 6, 7, 8, 9, and this is 10. So Guru Tegh Bahadur was the 10th guru of the Sikh. Aurangzeb will call him and will ask him to convert to Islam. That you must convert to Islam. You must adopt Islam religion. So Guru Tegh Bahadur was asked to convert to Islam. Convert to Islam. Now Guru did what? Guru was not agree. He denied. And finally what will happen? When Guru was not agree, when he denied this, Aurangzeb will do what? Aurangzeb will execute or kill Guru for refusing to convert to Islam. And the year was 1675 when Aurangzeb did what? Aurangzeb beheaded, गला काट दिया, tortured and beheaded Guru Tegh Bahadur. Tortured, torture भी किया, beheaded Guru Tegh Bahadur, and this was a public execution. Public execution in a public ceremony. Publicly he was tortured, he was executed, and his family members were also killed. Okay, or some writers write this. Okay, there is a book of William Dalrymple, and he writes about how Aurangzeb executed Guru Tegh Bahadur. So in a very cruel manner, in a very brutal manner, he was executed. And from here what will happen? The conflict between the Sikh power and the Mughal power will become more intense. अच्छा, 1675 में ये होता है, और औरंगजेब का फोकस 1681 से कहाँ हो जाता है? साउथ. Now what will happen? Aurangzeb will focus in south, so Sikh will create new administrative challenges for the Mughal Empire in the north. So this is the year 1675 when Guru Tegh Bahadur was tortured and killed. Okay, फैक्ट्स पे भी ध्यान रखना है क्योंकि प्रीलिम्स उतना ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हमारे लिए पढ़ाना आसान हो जाता है जब हम फैक्ट स्किप करते हैं.
बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आता है, बट दैट्स नॉट गुड। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या करोगे आप? सुनने में अच्छा लगेगा क्लास, बट एग्ज़ाम के लिए वो बहुत रेलिवेंट नहीं होगा। सुनाओ, दिस इज द ईयर 1675। 1675, गुरु तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड एंड किल्ड। जी, गुरु तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड एंड किल्ड, एग्जीक्यूटेड एंड किल्ड। और आप एक बात समझ पा रहे हो, हम फैक्ट को कैसे याद कर रहे हैं? रिलेट करके इवेंट्स के साथ। गॉट इट? फर्स्ट फेज औरंगजेब, सेकेंड फेज औरंगजेब। तो मैथमेटिक्स की तरह बैठ के प्रैक्टिस करो, तो फैक्ट भूलोगे नहीं। ठीक है ना, हमेशा रिलेट करो। इंडिविजुअल फैक्ट्स हम भूल सकते हैं। 1675, और इसके बाद देखो, दिस इज औरंगजेब रूल, यानी 1655 टू 1707, दिस इज व्हाट? औरंगजेब्स रूल। दिस पीरियड इज औरंगजेब्स रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपके साथ बता रहा हूँ। दिस पीरियड इज औरंगजेब्स रूल। एंड व्हाट विल हैपन? 1675 onwards, 1675 onwards, what will happen? Conflict between Aurangzeb and Sikhs will become more intense. Conflict between Aurangzeb and Sikh will become more intense. इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा? Intense. Clear? They are challenging Mughal authority. They are challenging Mughal authority. वो मुगल अथॉरिटी को क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं। ओके, their Sikh gurus were also questioning the administrative decisions that were taken by Aurangzeb. It means they were critical of the imperialistic order, right? ये बहुत बड़ी बात है, that Sikh gurus were also questioning, Sikh gurus were also questioning, also questioning, okay, questioning validity of, okay, Mughal imperialistic orders, and they were ready to defy it. They were also questioning the validity of Mughal imperial orders, and they were also defying it. They were also defying it. They were also defying it. मेरी बात समझ गए? They have become the symbol of dissent at that time. Symbol of dissent. Or obviously, if Sikh power is the symbol of dissent, other groups will also come and support them. कुछ लोग सीधा सीधा लड़ नहीं पाते तो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, वैसा ही होगा। सिख पावर इज फाइटिंग विद द मुगल एम्पायर, तो जो थोड़े कमजोर ग्रुप्स हैं, वीकर ग्रुप्स हैं, दे विल कम एंड सपोर्ट सिख। ठीक है, वो उनको सपोर्ट करेंगे। इट मीन्स दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस। ऑब्वियसली this is in the form of Sikh revolts and rebellions. So this Sikh revolts and rebellions will continuously increase. Military conflict, and wars will increase. Wars will increase. Now just imagine one thing, that on one side there is Mughal rulers who are central political authority. On other side there are Sikh groups, and they are fighting continuous wars from 1675, उसके पहले से जहांगीर के टाइम से लड़ रहे हैं। So will they exhaust their economic resources? Yes. Continuous wars will make you what? Weaker. ये भी होगा. If you are fighting continuous wars, this will also make you weaker. Obviously, it will have adverse impact on Aurangzeb also. Aurangzeb में भी तो हम पढ़ते हैं कि नॉर्थ में जो प्रॉब्लम्स बढ़ गई उससे भी उसको प्रॉब्लम हुआ. So obviously what we see that they are fighting constant wars, and in this way, right, this, okay, the economic conditions of Sikh power were also affected, economic conditions were also affected, and the reason behind this is military expenses. The economic conditions were also affected, and the reason behind this is military expenses. Okay, now who was the last guru? 10th guru. 10th guru कौन थे? ठीक है, 10th
Okay, Guru Gobind Singh. And the time period of Guru Gobind Singh is 1666 to 1708. This is the time period of Guru Gobind Singh. सबके टाइम पीरियड नहीं याद रखने हैं, इसका एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग. ओके, गुरु गोविंद सिंह टाइम पीरियड इज 1666 टू 1708. ये टाइम पीरियड है गुरु गोविंद सिंह का. एंड ही वाज द 10th गुरु एंड लास्ट गुरु. ये कौन है 10th और लास्ट गुरु? कुछ रिलेट कर पा रहे हो? औरंगजेब डाइड इन विच ईयर? 1707. गुरु गोविंद सिंह डाइड इन विच ईयर? 1708. सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? औरंगजेब ही है यहाँ पे. सो व्हाट वी सी हियर दैट on one side Guru Gobind Singh died in 1708 and Aurangzeb died in 1707. तो ये बताओ इसके बाद जो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएगा कि नहीं? कॉन्फ्लिक्ट विल बी कंटिन्यूड बट देयर इट्स इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी विल रिड्यूस. इससे क्या होगा? ओके, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द इंटेंसिटी and frequency the intensity and frequency of conflicts will reduce. Intensity and frequency of conflicts will reduce. This will happen. Clear? Intensity and frequency of conflicts were reduced. Okay, now इसमें एक और important point है, and that is गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु. ओके, टाइम पीरियड क्या है? 1666 टू 1708. और यहाँ एक आपको इंफॉर्मेशन लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ईयर वॉज 1699. राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ईयर वॉज 1699 एंड गुरु गोविंद सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा. खालसा की स्थापना किससे की थी? गुरु गोविंद सिंह. खालसा इन द ईयर 1699. तो अभी भूलने वाली बात नहीं है. खालसा कौन लेके आया? गुरु गोविंद सिंह. और खालसा ने क्या किया? इट ऑर्गेनाइज्ड सिख पावर इनटू एन इंपॉर्टेंट मिलिट्री फोर्स. ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So read this. By establishing Khalsa, Sikh groups were organized into powerful military groups. Okay, by establishing Khalsa, what we see here, that Sikh gurus were organized, okay, into powerful military groups. Sikh groups were organized into powerful military groups. क्यों रिलेट कर पा रहे हो? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा क्यों बनाया? यहाँ क्या देखा आपने? गुरु तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड. नेक्स्ट गुरु इज गुरु गोविंद सिंह. And he did what? He established Khalsa. In which year? 1699. Khalsa banaya. Now Sikh are important military power also. They were fighting continuous wars. Okay. Now what will happen the next? Again the story is very interesting. What we see is that after the last Guru, that is Guru Gobind Singh, Guruship, okay, technically here what we see that guruship came to an end, but it is, ऐसा हम इन जनरल कहते हैं, बट गुरुशिप इज एटर्नल. इट नेवर केम टू एन एंड. ठीक है, बट ये क्या होगा कि पर्सन से कहाँ चला आएगा? गुरु ग्रंथ साहिब में चला आएगा. दिस विल हैपन. तो बुक्स राइट दैट गुरुशिप केम टू एन एंड, जो टेक्निकली सही नहीं है, बट ऑब्वियसली जनरल सेंस में मान सकते हैं. नाउ गुरुशिप, लास्ट गुरु 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह. और इसके बाद ये गुरुशिप कहाँ चली आएगी? इट विल बिकम एटर्नल. सो द होली बुक ऑफ द सिख, दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब, इसको हम क्या कहते हैं? गुरु. नाउ गुरुशिप हैज बिकम एटर्नल. अब गुरुशिप क्या हो गया? एटर्नल हो गया, कभी खत्म न होने वाला हो गया. इट बिकम्स एटर्नल. गुरु ग्रंथ साहिब, देखो आज भी आप कहते हो गुरु ग्रंथ साहिब. गुरुशिप हैज बिकम एटर्नल. अब इसके बाद क्या होगा? इन जनरल सेंस गुरुशिप हैज कम टू एन एंड, गुरु गोविंद सिंह, बट
सिख क्या हो चुके हैं, दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ पावरफुल मिलिट्री ग्रुप, so they need a leader. So after Guru Gobind Singh, their leader, their military leader was बंदा बहादुर. वो गुरु नहीं है, वो क्या है, मिलिट्री लीडर है, क्योंकि 1699 में ही खालसा आ चुका है. So what we see is that after 1608, a new leader, sorry, 1708 Guru Gobind Singh died, and from 1708 to 1715 the leader was बंदा बहादुर. बंदा बहादुर, तो इनको गुरु बंदा बहादुर हम नहीं कहते हैं, वी कॉल हिम बंदा बहादुर. तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, गुरु गोविंद सिंह डाइड, इसके बाद गुरुशिप आ जाती है गुरु ग्रंथ साहिब में, एंड देन द मिलिट्री ग्रुप नाउ विल बी लेड और रिप्रेजेंटेड बाय बंदा बहादुर. ठीक है. नाउ बंदा बहादुर विल डू व्हाट, विल अगेन, अचानक से कॉन्फ्लिक्ट नहीं खत्म हो जाएगा, मैंने बोला था conflict will not suddenly stop, its intensity will be minimized. Now Guru Gobind Singh continued this war, read this, continued war with Mughal authority or successors of Aurangzeb. He continued wars with Mughal authority और successors of Aurangzeb. इन्होंने वॉर को क्या किया, कंटिन्यू रखा सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब से. लेकिन औरंगजेब के सक्सेसर क्या थे, वी ऑल नो, दे वेर द वीकर रूलर्स. ठीक है, सक्सेसर्स की कहानी हमें पता है, दैट दे वेर द लेटर मुगल्स. सो ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, दिस कॉन्फ्लिक्ट विल कम डाउन ग्रेजुअली. ठीक है, so gradually what we see is that gradually the conflict will come down. Gradually we see that conflict will come down. Gradually conflict will come down. ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता चला जाएगा, इट विल रिड्यूस ग्रेजुअली. और रिड्यूस होने के पीछे एक रीजन भी है, और वो रीजन क्या है, द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ सिख वेर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड इन फाइटिंग कॉन्टिन्यूअस एंड रिलेंटलेस वॉर अगेंस्ट द मुगल्स. लगातार लड़ रहे थे ना, तो इकोनॉमिक कंडीशंस तो अफेक्ट होगी. तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे, एक ये भी रीजन है कि देयर इकोनॉमिक कंडीशंस were adversely affected. Economic conditions were adversely affected. This is also one reason. Economic conditions were adversely affected. War came down. This is one reason. Now Mughal power Mughal power was not a great or powerful threat for the Sikh. इसलिए भी ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. नाउ इट वाज आल्सो नॉट अ पावरफुल थ्रेट फॉर द सिख. तो ऐसे भी कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो गया, इट वॉज नॉट अ पावरफुल थ्रेट फॉर द सिख, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो गया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हैव यू नोट डाउन ऑल दिस इंफॉर्मेशंस. ठीक है, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना, यू विल रीड इट 3 to 4 times, तो यू विल स्टार्ट को रिलेटिंग द फैक्ट्स. एंड वेन एवर यू आर रीडिंग, सिट विद पेन एंड पेपर एंड कीप राइटिंग द फैक्ट्स. लिखते रहना है, ठीक है ना, तो चीज़ें याद रहेंगी आपको, रोट लर्निंग नहीं करना. अब देखो क्या हो रहा है, that is, the story is again very interesting. After 1707 we already have studied that what will happen, this integration of Mughal power starts. This integration of Mughal power starts, or we can say that decline of Mughal power starts. And at the same time what will happen, happening here, regional kingdoms were continuously becoming powerful. It means what will happening, what is happening here, regional kingdoms are trying to regional kingdoms are trying to assert their independent status. Regional kingdoms are also trying to assert their independent status. And this is what, this is a symbol, this is a symbol, this is an indication, or this is an hint of what, this is an indication and hint that Mughal power is decaying, becoming weaker, central authority becoming weaker.
this is an indication or fact that what is happening here, that the central authority is becoming weaker. Central authority क्या होती जा रही है? Weaker. Challenges before the central authority are continuously increasing. This is the symbol. इस central authority के सामने challenges बढ़ रहे हैं. Now, in the meantime, what will happen? Some external invasions will take place. Okay, in the meantime, what we see, that some external invasions will take place. Write this. Some external invasions will take place. Some external invasions were taking place. And these external invasions are, first, Iranian invasion. You all know about this Iranian invasion. Who was the invader? So the name of this invader was Nadir Shah. Nadir Shah. Year was 1739. ये आया और इसने दिल्ली को लूटा. Nadir Shah. Okay. He came, looted Delhi. This is Nadir Shah. Okay. Now, the next set of invasion was Afghan invasion. Afghan invasion. एक तो मुगल पावर automatically weaker था, and this invasions will make the Mughal power more weaker. Afghan invasion. So this is what 1748 to 1756. What we see, that the name of this Afghan invader was Ahmad Shah Abdali. And what we see, continuous, frequent and continuous invasions of Ahmad Shah Abdali between these years. लगातार उसने अटैक किया अहमद शाह अब्दाली ने. It means there was completely a condition of chaos, क्योंकि यहाँ पे लूटा जा रहा है कैपिटल को. Condition of chaos. There was lawlessness. Condition of chaos. There was lawlessness. Clear? And the capital was being looted. The capital was being looted by the invader. The capital was being looted by the invader. इसका मतलब in these conditions, the main challenge of Sikh क्या था? मुगल पावर. ओके, मुगल पावर अपने आप क्या हो गया? वीक हो गया. ओके, Mughals were the main challenge for the Sikh. Now in these conditions, what we see is that the Mughal power is weaker. So weakening Mughal authority, will it give, is it like a chance or the opportunity for the Sikh so that they could reconsolidate themselves, re-energize themselves? Yes. अगर आपका दुश्मन कमजोर होगा तो वो टाइम आपके लिए ऐसा होगा जिसमें आप फिर से अपने आप को क्या कर सकते हो? कंसोलिडेट कर सकते हो. And Sikh did the same. So write this point, that in this state of declining Mughal power, the Sikhs got the opportunity. In this state of declining Mughal power, Sikhs got the opportunity to reconsolidate themselves. Sikhs got the opportunity to reconsolidate themselves. Now, they are again more organized than before. They got the opportunity to reconsolidate themselves. Now they are again more reorganized than before. अब वो पहले से क्या थे? ज़्यादा organized थे. Now they were again more organized than before. So now I am writing here that Sikh now again reconsolidated themselves. They did what? Reconsolidated themselves. They were more organized than before. They were more organized than before. They reconsolidated themselves and they were more organized than before. पहले से ज़्यादा organized थे. ठीक है, अब क्या होगा? कैसे organized थे? How they were organized? Now this is our question, that how were they organized?
how were they organized in this new phase? ये क्या है? नया phase है. This is like a new phase for the Sikh power. So how were they organized? This we need to understand. Now I'm drawing a simple sketch. ठीक है. When you will read a spectrum, there are hundreds of facts. सारा नहीं याद करना है. I am only selecting those facts and informations which will be asked in exam. एक बार क्लास करने के बाद यूपीएससी इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे. ठीक है ना. तो अननेसेसरी फैक्ट्स को हटा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है क्या हो रहा है. देखो, जत्था, देयर इज अ वर्ड जत्था, वी स्टिल यूज टुडे, कि जत्थे में आ गए. जत्था मतलब क्या होता है? ग्रुप. मेरी बात समझ गया ना. तो वेरियस सिख ग्रुप्स. तो पहले इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? जत्था. देयर वेर वेरियस जत्थास और ग्रुप्स. दीज आर व्हाट? वेरियस जत्था. जत्था का मतलब हो गया ग्रुप. सिख ग्रुप्स, वेरियस सिख ग्रुप्स और जत्थास. अच्छा, ग्रुप को हेड करने के लिए कोई सरदार होना चाहिए, चीफ होना चाहिए, राइट? So here the chief of this jatha or group will be called jathedar. Here the chief of this jatha or group will be called jathedar. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे जत्थास थे. All these yellow colored, okay, circles are the jathas. So there were various jathas or the groups, Sikh groups, and they were controlling smaller territories in पंजाब एंड नियर बाई एरियाज. छोटी छोटी टेरिटरीज पे कब्जा था इनका. ठीक है. दे वर कंट्रोलिंग दिस. दैट इज कॉल्ड जत्था ग्रुप एंड देयर चीफ वाज कॉल्ड जत्थेदार. अच्छा, ऑर्गेनाइज होने का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज होने का मतलब क्या है? कि वेरियस ग्रुप्स विल कम टुगेदर. ओके, एम आई राइट? ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? वेरियस ग्रुप्स विल कम टुगेदर. So now what will happen? Group of various jathas, जैसे मान लो ये सारे जत्थास हैं, तो group of all these jathas will be called misl. Now they are more organized. Now group of all these jathas will be called misl. Now group of all these jathas is called misl. Group of all these jathas again is what? Misl. Group of all these jathas were organized and they became misl. अब बताओ, are they more organized than before or not? Previously they were organized in the form of jatha. Now they are organized in the form of misl. It means now they are more organized than before. और इसका मैं, when I am using this word that now they are more organized than before, it means देखो, here each misl will have a chief. हर मिसल का क्या होगा? एक चीफ होगा, राइट? ईच मिसल विल हैव अ चीफ. ओके. नाउ एग्जांपल ऑफ सच मिसल्स नेम क्या है? जैसे भंगी मिसल, अहुलवालिया मिसल, ये सब नाम है मिसल के. अहुलवालिया मिसल, रमपुरिया मिसल, सुकेर चाकिया मिसल, रमपुरिया मिसल, सुकेर चाकिया मिसल, सुकेर चाकिया मिसल. दीज आर द नेम ऑफ द मिसल. सबका नाम नहीं याद रखना है. यू विल नेम, रिमेंबर ओनली वन नेम, दैट इज सुकेर चाकिया मिसल. सुकेर चाकिया मिसल. सो देयर वर डिफरेंट मिसल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ सच मिसल्स वेर 12. ऐसे टोटल मिसल जो थे उनकी संख्या 12 थी. टोटल नंबर ऑफ सच मिसल्स वेर 12. There were 12 such missiles. It means 1, 2, 3, 4. इसी तरह से the total number of missile was 12. Okay. And all these missiles were considered equal. फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा मिसल बड़ा है या कौन सा मिसल छोटा है. All these missiles will be considered equal. It means they were reorganized on the basis of principles of
इक्वलिटी, कोई बड़ा छोटा नहीं है, all were considered equal. So when we talk about the organizations of these Misls, what was followed here? So the principles of equality was followed here. Principles of equality was followed here. It means all Misls were equal. All Misls were considered equal. All Misls were considered equal. सब क्या थे? Equal थे. And this is what egalitarian nature of the Misl. Egalitarian nature of the Misls. All these Misls were considered equal, and this was the egalitarian nature of the Misl. This is progressive or regressive? Egalitarian nature. Progressive, obviously. If you are considering all these Misls as equal, so this is what? Progressive nature. ये बहुत ही progressive nature. This is a kind of progressive nature. It shows what? The unity between these Misls. It also shows what? Unity between these Misls. इन सभी Misls के बीच में unity थी, ये भी इस बात से पता चलता है. It shows the unity between these Misls. But देखो, system तो खराब हो सकता है. What will happen? Okay, in the coming years, in the next 10 to 20 years, what will happen? The egalitarian nature of these Misls will be lost. Now what will happen? In order to increase their power, prestige and influence, these Misls will come in conflict with each other. It means the sense of unity was also what? Lost. Okay, तो ये प्रॉब्लम अब दोबारा, अब ये एक बार रीऑर्गेनाइज आप हुए, रीऑर्गेनाइज होने के बाद फिर से प्रॉब्लम आएगी. सो राइट दिस challenges. Gradually, various challenges also appeared gradually in the coming years. Gradually, in the coming years. Gradually, in the coming years, various challenges also appeared. Various challenges also appeared. Various challenges also appeared among these Misls. Various challenges also appeared among these Misls. In the coming years, what we see? That various challenges also appeared in these Misls. वो challenges क्या हैं? Okay, so write point 1. Egalitarian character. Egalitarian character of these Misls were lost. ये पहली प्रॉब्लम है. Egalitarian character of these Misls were lost. Egalitarian character of these Misls were lost. Right, second point. In order to increase their power and influence, Misls came in conflict with each other. Misls came in conflict with each other. In order to increase their power and influence, Misls will come in conflict with each other. These Misls will come in conflict with each other. एक दूसरे के साथ conflict की conditions में आएंगे. ठीक है? And this shows what? That the unity between Sikh groups is now disappearing. The unity between these Sikh groups was now disappearing, and this is what? A state of degradation of Sikh power. ठीक है? Unity is disappearing, and this is what? A state of degradation. State of degradation of Sikh power. यही तो है, state of degradation of Sikh power. Unity is disappearing, and this is what? A state of degradation of Sikh power. Sikh power degrade हो रहा है.
है। अब इसके बाद दोबारा से सिख पावर को यूनाइट करने कौन आएगा? रणजीत सिंह। And now we are entering into the most important topic. Okay, now you will write that. Okay, a leader of Suker Chakia Misl. देखो जितने मिसल थे, number of missiles were 12, and there was a missile. The name of this missile is what? Suker Chakia Misl. And leader of this Suker Chakia Misl was Ranjit Singh. Ranjit Singh. He was the leader of this Suker Chakia Misl, right? And what he will do now? Okay, he will emerge as a Masiha, and he will solve, he will again reorganize, okay, reunite and reconsolidate Sikh power in India. Reorganize, reunite and reconsolidate Sikh power in India. He will again do this. He will reorganize, reunite and reconsolidate Sikh power in India. दोबारा से सिख पावर को क्या करेगा? रिकॉन्सोलिडेट करेगा रंजीत सिंह, राइट? तो इसके लिए वो क्या करेंगे बताओ? आपको क्या करना होगा? यू विल हैव टू सॉल्व all the differences of the missiles. You will have to consolidate all these missiles into a single power, that is Sikh power. And Ranjit Singh did this. Okay? He consolidated all these groups or the missiles. He consolidated all these missiles into a single political power, and that is Sikh power. Sikh power. And what we see again, unity was achieved. He consolidated these different groups into a single political power, that is, okay, Sikh power. And he will let down the foundation of a powerful Sikh empire in India. It means the territories which were controlled by Sikh were at its climax during the Ranjit Singh time. So he will also let down the foundation of a powerful Sikh empire in India. He will also let down the foundation of a powerful Sikh empire in India. Okay. And he was the ruler of the Sikh during this time period, 1801 to 1839. He was the ruler of the Sikh. So this is the first important achievement of Ranjit Singh. पहला important achievement है कि क्या किया? He solved the differences of the missiles, brought them together, united together, reorganized them, reconsolidated them, reunited them into a single power. ठीक है, तो ये पहला क्या है? सबसे बड़ा अचीवमेंट है. And now what he will do? When you will unite all, so Sikh power will be a mighty power. Then they can do what? He was ruling in Punjab and nearby territories, and Ranjit Singh will do what? Ranjit Singh will start annexing new territories. ये क्या दिखला रहा है? कि रूलर पहले से ज्यादा पावरफुल है. He will annex Amritsar. He will annex, okay, Lahore. Okay, in this way, he will start annexing new territories. So what will happen? Military achievements of Ranjit Singh. Okay, he is also known for his military achievements. Read this. Started annexing new political territories. He started annexing new political territories like Amritsar, like Lahore. पंजाब एंड नियर बाई एरियाज पहले से इनके कंट्रोल में. अब क्या आ गया? अमृतसर. अब क्या आ गया? लाहौर. तो स्टार्टेड एनेक्सिंग न्यू टेरिटरीज. अच्छा, टाइम क्या है? अब ध्यान से देखो, अब फिर से रिलेट करो आप चीजों. 1801. एंड व्हाट अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन दिस टाइम पीरियड? 1801. ईस्ट इंडिया कंपनी. अब यहाँ पे आपको रिलेट किससे करना है? EIC से. नाउ जस्ट
establish some relations, EIC. So we all know 1757, 1764, 1765, 1765 to 1772, ये सब आपको पता है. Dual system of governance, Treaty of Allahabad, Battle of Buxar. This is what? Battle of Plassey. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब है बताओ? 1767 से. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब है? 1775. मैसूर को पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया. व्हाट इज द ईयर? 1799. ठीक है. अवध was under subsidiary alliance. What is the year? 1801. अवध was, अब अवध के साथ क्या कर लिया? Subsidiary alliance कर लिया. It means this is the phase, this is what? Beginning of 19th century. 1801 is what? Beginning of 19th century. Beginning of 19th century. And in this beginning of 19th century, what we see in India? Mughal authority was declining. Second, now defeat of Marathas in third battle of Panipat established what? That who is not going to fill the political vacuum. पता है आपको कि Marathas will not be able to fill the political vacuum. और क्या हो चुका है? Out of all the foreign companies in India, East India Company has established its supremacy. Now East India Company has established itself as one of the most important claimant of political power in India. And that power will not like an emerging Sikh Empire. अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी हो और ईस्ट इंडिया कंपनी में आप रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना पॉलिटिकल रूल स्टैब्लिश करना चाहती है और ऑलरेडी आप बहुत सारा काम कर चुके हो. नाउ यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लेमेंट ऑफ पावर इन इंडिया एंड सडनली यू सी द राइज ऑफ सिख एम्पायर इन द नॉर्थ, emerging Sikh Empire in the north. Will you like this? No. Emerging Sikh Empire in the north is like, okay, a challenge, is like a threat for East India Company, who is trying to establish itself as a political power in India. Okay, so write this point, this is very important. Write this: the rise of Sikh power in north in the beginning of 19th century. 1801 है तो 19th century मैंने लिखा, right? The rise of Sikh power in north in the beginning of 19th century was like a threat. The rise of Sikh power in India in the beginning of 19th century was like a threat or challenge for the EIC in India, for the EIC in India, because for the EIC in India, because EIC was trying to establish its, because EIC was trying to establish its political and administrative control over India at this time, because EIC was trying to establish, because EIC was trying to establish its political and administrative control over India at this time, was trying to establish its political and administrative control over India at this time. Is it clear? Any problem? EIC wants to be the ruler, and Punjab and other territories under the leadership of Ranjit Singh, Sikh power under the leadership of Ranjit Singh is rising. He is also getting important military conquest. Now British were what? British were very diplomatic in their outlook. ये चैप्टर में इतना टाइम इसीलिए लिया ना कि जब तक आप इस चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ोगे, ठीक है, आप कभी भी मॉडर्न इंडिया के एसेंस को समझ ही नहीं पाओगे. दैट्स व्हाई इंडिया इन 18th सेंचुरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिल्म से खूब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. ठीक है, तो ये 2 आवर्स के लेक्चर वाली चीज नहीं है.
Okay, you should discuss a lot. Okay, तो देखो अब क्या हो रहा है. Now what is happening here? We all know about East India Company. That East India Company was very diplomatic in its outlook. Very diplomatic in its outlook. AIC was very diplomatic in its outlook. And now we are going to discuss this part that is very important. Okay, and it has been, what I am going to discuss has already been asked multiple times in prelims examination. ठीक है, मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है. ध्यान से समझो इस बात को. EIC was very diplomatic in its outlook and this is beginning of 19th century. The time period is what? Beginning of 19th century. ये 19th century का beginning है. ठीक है, this is the time of रणजीत सिंह. और रणजीत सिंह का टाइम हमने क्या लिखा है यहाँ? फ्रॉम 1801 टू 1839. 1801 टू 1839. ओके, अब एक यहाँ पे मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ. आई एम ड्रॉइंग जस्ट अ रफ स्केच जिससे आपको रिलेट करना है चीज़ों. ड्रॉ दिस रफ स्केच. सपोज दिस इज इंडिया. ड्रॉ दिस रफ स्केच इन योर नोट. सपोज दिस इज इंडिया. एंड इन एग्जाम ऑल्सो यू कैन ड्रॉ रफ स्केचेस. ठीक है, कोई मैप है पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती. रफ स्केच यू कैन गिव द मैसेज टू द एग्जामिनर. एंड दिस इज north west part. This is what? North west part of India. Northwest part of India. Here you will see the condition, the political territories of Afghanistan region, Afghanistan, Sindh. ठीक है, लाहौर, मुल्तान, ऐसे यहाँ लिख लो, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर. ठीक है, और here I am drawing a territory that is Punjab and nearby territory. Punjab and nearby territory. Got it? ध्यान से समझना इस बात को. The context is very much important that we are going to learn here. Okay, now look here. This is the year what? 1801. And this was the age of new imperialism. ये नए साम्राज्यवाद का दौर था. In world history I will discuss with you this concept. This was the age of new imperialism. एक बॉक्स में लिखो, दिस वॉज द एज ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म. 1870 से लेकर 1914, दिस पीरियड इज नोन एज एज ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म इन यूरोप. ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इन यूरोप ऑल्सो बर्थ ऑफ टू न्यू नेशंस इज सीन इन द ईयर 1870. कौन से दो नए नेशन से बताओ यूरोप में? इटली एंड जर्मनी. ठीक है, 1870-71. जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में थे, दे नो दिस दैट इन 1877-70-71 व्हाट वी सी birth of two new nations in Europe on the political map of Europe, Italy and Germany. और इन्होंने क्या किया? Very soon they will declare their colonial and imperialistic ambitions. ये कहेंगे कि भाई कॉलोनीज होना सम्मान की बात है. इट्स अ मैटर ऑफ रेस्पेक्ट एंड प्राइड. ठीक है, जैसे आप घर के बाहर महंगी महंगी कार खरीद के लगा देते हो, यूज नहीं करते हो, दूसरों को दिखाने के लिए, वैसे ही कॉलोनीज, possessing colonies was like a matter of pride. Okay, it boosted the nationalist sentiments and feelings of the people कि हमारी कंट्री बहुत पावरफुल है, बहुत सारे कॉलोनीज हैं. एंड हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डार्विनिज्म वाज बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन यूरोप. यूरोप में कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो रहा था? सोशल डार्विनिज्म. अच्छा, डार्विन्स थियरी यू ऑल नो. व्हाट इज डार्विन्स थियरी? क्या है डार्विन्स थियरी? एग्जैक्टली, इट वाज अबाउट द races, survival of the fittest. But what is social Darwinism? If you apply this theory on society, that is social Darwinism. It means European nations, powerful nations of Europe are saying that those who are fit to rule
will rule the world, and those who are unfit, they must die or they should get expelled. जो पावरफुल है वो क्या करेगा? रूल करेगा, और जो वीकर है वो क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइट होगा, that will die. So when the concept of Darwinism will apply to the society, this is called social Darwinism. That those who are powerful, okay, will be able to survive, they will rule. और यहीं से क्या आ जाएगा? The concept of racial superiority, that we are the superior races. Those who are powerful will rule, and those who are weaker, okay, should be allowed to die. And what about Africa? What about Asia? The countries of Asia and Africa, they were weaker. Abhi bhi, we use a word third worldism. Okay, third world countries. For the countries of Asia and Africa, we use a word developing nations and underdeveloped nations. These are countries of Asia and Africa. ठीक है? तो अब ये यूरोपियन नेशंस क्या कह रहे हैं कि एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज पे हमारा राइट है, वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है। मेरी बात समझ गया ना? ये है सोशल डार्विनिज्म। और ब्रिटिश वेर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडिया, एंड इंडिया वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉलोनी फॉर द ब्रिटिशर्स। इंडिया क्या था ब्रिटिश के लिए? मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉलोनी। और इंडिया को ब्रिटिश क्या कहते थे? दे यूज टू कॉल इट अ क्लासिक कॉलोनी। क्लासिक कॉलोनी भी कहते थे। अच्छा बताओ, आपके घर में कोई बहुत कीमती चीज रखी हो और चोर उचक्कों को पता चल जाए, तो घुसेंगे कि नहीं चोरी करने के लिए? दे विल डेफिनेटली डू। ठीक है, ऐसी कीमती चीज है इंडिया, जो ब्रिटिश के पास है। इंडिया इज गोल्डन बर्ड, इंडिया इज क्लासिक कॉलोनी फॉर द ब्रिटिश, एंड ब्रिटिश वर नोइंग दिस, that the other European countries know this, that the India as a colony is the most profitable colony for the British. And in this age of new imperialism, what was happening? Colonial claims were increasing, fight for colonies were increasing. ठीक है, आपकी कॉलोनी है, कोई दूसरा हड़पने की कोशिश करेगा, that is called colonial rivalry and conflict for the colonies. ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात पता थी that this is the age of new imperialism and colonial conflict are increasing, colonial rivalries are increasing. Now company was doing a calculation. They were considering that in future this might be a possibility that Russia will invade India through northwest. देखो, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे रूल क्यों किया? क्योंकि वो कमिंग डेंजर से बचने के लिए भी उपाय कर लेते थे कि भविष्य में क्या हो सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है। दे मेड प्लान्स फॉर दैट। मेरी बात समझ गया ना? तो दे वर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर थ्रेट्स, और फ्यूचर थ्रेट उनको क्या लग रहा था कि दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी फ्रॉम दैट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट विच कंट्री मे इन्वेड। कौन सी कंट्री यहां इन्वेड कर सकती है? विच कंट्री मे इन्वेड? रशिया। दिस नेवर हैपन, कभी हुआ नहीं ऐसा, बट उनको लगता था कि रशिया इन्वेड कर सकती। इसी तरह से देखो, ब्रिटिश को यह लगता था कि जापान इन्वेड कर सकता है, एंड दे हैव ऑलरेडी मेंटेन्ड अ रिजर्व्ड आर्मी फॉर टू स्टॉप दिस इन्वेजन। ठीक है, पहले से आर्मी मेंटेन कर रखी थी, और क्विट इंडिया मूवमेंट में उसी आर्मी का यूज किया और क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस किया। मेरी बात समझ गया ना? तो वो पहले से खतरों का अंदाजा लगाते थे, तो दे वर थिंकिंग कि रशिया माइट इन्वेड। अच्छा, अगर रशिया इन्वेड करेगा, अब आप बताओ इंडिया में द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इज इन विच टेरिटरी? सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है इनके लिए? बंगाल। फिर इनके पास एक यहाँ पे है बॉम्बे, और फिर क्या है? मद्रास। These were the three presidencies. There are other areas also which they were controlling. बहुत ध्यान से समझना है स्टोरी की तरह, जल्दबाजी नहीं है ना आप लोगों को? ठीक है, तो पूछना मत कितने क्लास में खत्म होगा। इस बैच में जितने लोग भी मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, ठीक है, सब लोग एकदम एक्सीलेंट लेवल पे पहुंच जाओगे, एंड दिस विल हैपन फॉर अ सिंगल टाइम। एक ही बार होगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि ऑल द सेशंस आर बीइंग रिकॉर्डेड, तो वो मैं बच्चों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि इतना टाइम दे के मैं किसी कोचिंग में मॉडर्न इंडिया पढ़ा नहीं सकता, कोचिंग वाले पढ़ाने भी नहीं देंगे।
कहेंगे यार दूसरों की दुकानदारी बंद करा दोगे तुम, ठीक है, तो वैसा होगा भी नहीं, तो ध्यान से समझना है इसको। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रेजेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल presence of EIC. EIC is getting a lot of gains from Bengal. We all know this. और पहले से एक पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी फॉलो करती है, दैट पॉलिसी वाज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। जनरली द पीपल थिंक दैट दिस पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, आमतौर पे लोग यही मानते हैं, in the initial phase of establishment of companies rule, in the initial phase of establishment of companies rule, और वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया में था फ्रॉम 1775 टू 1782, ठीक है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इंप्लीमेंट्स कि फॉर एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल आपको बता चुका हूं कि दिस इज बंगाल एंड दिस इज अवध, ये क्या है अवध, ये क्या है बंगाल। तो 1765 में बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद व्हाट ईस्ट इंडिया कंपनी डिड, ईस्ट इंडिया कंपनी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विथ विच स्टेट, अवध, ओके, दे विल हेल्प अवध टू एम्पावर इटसेल्फ, अवध को वो हेल्प भी करेंगे, अवध की आर्मी को ट्रेन भी करेंगे कि अवध को एक पावरफुल स्टेट बनाया जा सके। Why? Because they want to use Awadh as a powerful buffer. They wanted to use Awadh as a powerful buffer for the protection of their most profitable interests in Bengal region. मेरी बात समझ गया ना, ये है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, कि जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल फ्रॉम बंगाल, दे वर हैविंग the most important profits, their most profitable province presence was in Bengal region, and they are having friendly relation with Awadh, they are empowering Awadh to make it more powerful so that they could use Awadh as one of the most powerful buffer to protect their profitable rights in Bengal. ये पॉलिसी है, क्या है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। दिस पॉलिसी इज हम्बल पॉलिसी और नॉट, यस, अवध को लगेगा अंग्रेज कितने अच्छे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग, सपोर्टिंग, मेकिंग माई मिलिट्री मोर पावरफुल, कह रहे हैं कि हम तुम दोस्त हैं, साथ में बैठ के पार्टी करते, कितने अच्छे हैं। बट टेक्निकली कर क्या रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी, या दे आर ट्राइंग टू मेक देयर प्रेजेंस मोर पावरफुल इंडिया, दे आर ट्राइंग टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। टेक्निकली पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कभी खत्म ही नहीं हुआ था। People thought that policy of ring fence, yes, it was introduced by Wellesley, but British used it always. इस पॉलिसी को हमेशा यूज किया, कैसे यूज किया वही मैं आपको बताने वाला हूँ in this part. Have you understood this? This topic we will again discuss in the policies for the expansion of British rule in India. Now look here, British were very smart. अब British के पास two options थे. There were two options with East India Company. There were two options. ऑप्शन नंबर 1 क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, दैट EIC शुड फाइट विथ रंजीत सिंह, विल शुड डिफीट रंजीत सिंह, ठीक है, और शुड स्टैब्लिश इट्स पॉलिटिकल कंट्रोल इन दीज एरियाज। ऑप्शन नंबर 1 कि रंजीत सिंह के साथ लड़ाई लड़ो, रंजीत सिंह को डिफीट करो और इस पूरे के पूरे एरिया पे क्या कर लो, अपना पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लो। गॉट इट, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। अब इस ऑप्शन नंबर 1 के क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, बता सकते हो आप। If you will establish your political control, you will have to spend your economic resources, you will have to maintain your army, plus the people who are living in these areas when they will do revolts and rebellions, you will have to suppress this revolt and rebellion. तो इसमें काफी पैसा खर्चा हो सकता है, और company is a pure businessman. They will choose option number 2. And what is option number 2? The option number 2 is very interesting. What is this option number 2? Option number 2 है that they should sign a treaty with रंजीत सिंह। ध्यान से समझो, पहले अभी लिखवा दूंगा, सुनो, listen first, ठीक है, बाकी सारे मॉड्यूल्स पढ़ते रहो ध्यान से, अभी नोट करा दूंगा। देखो तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, they should sign a treaty with रंजीत सिंह, ठीक है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का ट्रीटी, ठीक है,
and they should help and support Ranjit Singh in making his army more powerful. रंजीत सिंह की आर्मी को क्या कर दो, ज्यादा पावरफुल बना दो. And when Ranjit Singh will be a powerful ruler in this part, will Ranjit Singh be able to stop foreign incursions, foreign invasions? Yes. A powerful state in northwest will be helpful, will serve as a powerful buffer for the protection of colonial rights of East India Company in India. तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, रंजीत सिंह के साथ क्या कर लो, ट्रीटी कर लो. नाउ okay, we are going to discuss option number 2. So what East India Company did, write option number 2. And what is this option number 2? Here I will discuss two treaties with you, and both these treaties are important for the exam. One treaty is okay, बहुत ही popular treaty है, that is Treaty of Amritsar. One treaty here is Treaty of Amritsar. Treaty of Amritsar, and the year was 1809. This is one treaty, Treaty of Amritsar. Okay, and there is one more treaty that was signed in the year 1838. 1838, and this treaty was called, okay, इसको कहा जाता है tripartite treaty. Okay, tripartite treaty. There are two. Treaty of Amritsar, this treaty was signed in 1838. And what is the time period of Ranjit Singh's rule? So the time period of Ranjit Singh's rule is 1801 1839. ठीक है. So first we are going to discuss this first treaty, that is Treaty of, okay, अमृतसर. अब देखो क्या है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज व्हाट, okay, East India Company will give a proposal to Ranjit Singh. This treaty was signed between East India Company and Ranjit Singh, and East India Company gave a proposal, and what was the proposal? Point number 1, proposal is Satluj River will be taken as boundary. Read this, Satluj River will be taken as boundary. Satluj River will be taken as boundary. Okay. And point number 2 is, to the north of Satluj, Ranjit Singh was free to extend his political territories. It means he will conquer territories to the north of Satluj. He was free to extend his political territories to the north of Satluj. He was free to extend his political territories to the north of Satluj. And now what is the option number 3? Read this. To the south of Satluj, he was not allowed to extend his political territory or control. He was not allowed to extend his political control to the south of Satluj. यानी कि ब्रिटिश ने कहा that Satluj River will be taken as boundary. Suppose this is Satluj River. Ranjit Singh was allowed to extend his political territory to the north, but he was stopped to extend his political territories or boundaries to the south of Satluj River. सतलज रिवर के साउथ में आप नहीं जा सकते, नॉर्थ में आपको जहां तक जाना है चले जाओ. British said that if you will follow this treaty, we will help you, we will protect you, both of us will help and support each other. Okay, if you follow this treaty. But if you will try to extend your political territories to the south, then this will be considered as a challenge, giving a challenge to the East India Company, and EIC will fight war with you. तो दो ऑप्शन है, या तो दोस्ती करो, दोस्ती करने के बाद नॉर्थ में जितना आगे आपको जाना है आप जाओ,
कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर सब जीत लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट साउथ में नहीं आना है। क्यों साउथ में नहीं आना है? क्योंकि सतलज के साउथ में देयर इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रेजेंस फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, नाउ एंड दिस इज व्हाट राइट फोर्थ पॉइंट, दैट इफ यू एक्सेप्ट दिस ट्रीटी, so both of us will support each other. Both of us will support each other. Both of us will support each other. ये था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, अब रणजीत सिंह के पास दो ऑप्शंस थे, टू एक्सेप्ट दिस ट्रीटी और ओके टू रिजेक्ट दिस ट्रीटी। व्हाट रणजीत सिंह शुड डू, क्या करना चाहिए रणजीत सिंह? शुड ही एक्सेप्ट दिस ट्रीटी? क्यों, वाई? And if yes, this is good, this is diplomatic realism of Ranjit Singh, right? This Ranjit Singh accepted this treaty. Ranjit Singh accepted this treaty, and this is what, this is a kind of diplomatic realism of Ranjit Singh. ये क्या है? This is a kind of diplomatic realism of Ranjit Singh. Okay, why I am calling it diplomatic realism? Because Sikh power was already in a disorganized state. Ranjit Singh somehow organized it, and this is the nascent phase of Sikh Empire. अभी शुरुआती दौर है, इनिशियल फेज है। ही बिकेम द रूलर इन विच ईयर? 1801 ना। तो अभी तो मुश्किल से सिख एम्पायर को कंसोलिडेट कर पाए थे रणजीत। एंड इफ ही विल चूज टू फाइट विथ ईस्ट इंडिया कंपनी in the initial phase of the foundation of empire, what could be the possibility that the Sikh empire in India could be destroyed forever? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से हरा सकती थी, पता था रणजीत सिंह को। बैटल ऑफ पलासी, बक्सर, फाइट विथ मैसूर, फाइट विथ मराठा, they were knowing that they are having a lot of revenue from Bengal. So this was not wise to fight with East India Company in the nascent phase. दूसरी चीज, he was getting the opportunity to extend the political territory of Sikh Empire to the north. ठीक है, तो वो एम्पायर को और एनलार्ज कर सकते थे। गॉट इट? So he extended his territories to the Kashmir, Peshawar and Multan region also. ठीक है, so he signed this treaty. So read this. This was an example of diplomatic realism, and right, why it was an example of diplomatic realism? Here assertion and reasoning based question can be asked in exam. That's why I am discussing assertion and reasoning based question. आप समझ पा रहे होगे? क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आप सॉल्व कर लोगे। So right, reason is why, right? Point 1, this was the nascent phase, this was the nascent phase or the initial phase, this was the nascent phase of growing Sikh empire in India. This was the nascent phase of growing Sikh empire in India. So in this stage, conflict with EIC could shatter the dream of a powerful Sikh empire. It could shatter the dream for a powerful Sikh empire. इससे पावरफुल सिख एम्पायर का सपना टूट सकता था। ओके, राइट। पॉइंट नंबर 2, इन दिस ट्रीटी रणजीत सिंह was also getting the opportunity. In this treaty, Ranjit Singh was also getting the opportunity. In this treaty, Ranjit Singh was also getting the opportunity to extend his political control to the north as much as he could do. To extend his political control in the north as much as he could do. As much as he could do.
तो डिप्लोमेसी थी ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लेना, ना कि इसको रिजेक्ट करना, राइट। रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट क्या रहा? ही एक्सेप्टेड दिस ट्रीटी, व्हाट वाज द रिजल्ट, राइट? रिजल्ट पॉइंट 1, रिजल्ट, ओके। Ranjit Singh was successful in establishing political control over. Ranjit Singh was successful in establishing political control over. Ranjit Singh was successful in establishing political control over Kashmir, Peshawar, and Multan region. Kashmir, Peshawar, and Multan region. He also controlled some territories of Afghan region. He also controlled some territories of Afghan region, Kashmir, Peshawar, and Multan region, and he also controlled some territories of Afghan region. कश्मीर, पेशावर, मुल्तान और इसके अलावा ही ऑल्सो कंट्रोल सम टेरिटरीज ऑफ अफगान रीजन। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? अ पावरफुल सिख एम्पायर, रेड दिस, द ड्रीम ऑफ अ पावरफुल सिख एम्पायर वाज कंप्लीटेड। द ड्रीम ऑफ अ पावरफुल सिख एम्पायर वाज कंप्लीटेड। द ड्रीम ऑफ अ पावरफुल सिख एम्पायर वाज कंप्लीटेड। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि द आर्मी ऑफ रणजीत सिंह वाज द सेकंड बेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन एशिया आफ्टर द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद दूसरी सबसे पावरफुल और बेस्ट आर्मी थी। ओके, ये कैसे पूरा हो पाया? ट्रीटी की वजह से। सो राइट, सेकंड पॉइंट, दैट आर्मी ऑफ रणजीत सिंह वाज द सेकंड बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल आर्मी इन एशिया। I am not saying India, I am saying Asia. Army of Ranjit Singh was the second best and most powerful army in Asia after army of EIC. After army of EIC. Right, next point. Next point, right. Ranjit Singh followed policy of religious tolerance in matters of administration. Ranjit Singh followed policy of religious tolerance in the matters of administration. In the matters of administration. What do I mean to say? That he gave equal opportunity to the Hindus and Muslims both in administration. ठीक है ना? He gave equal opportunity to Hindus and Muslims both in administration. दोनों को मौका दिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल उनका एक मिनिस्टर जो था उसका नाम था फकीर अजीजुद्दीन। तो व्हाट इज द एग्जाम्पल हियर? द रूलर इज हिंदू बट हिज मिनिस्टर इज मुस्लिम। फकीर अजीजुद्दीन वाज हिज मिनिस्टर। ठीक है, व्हाई वी आर रीडिंग दिस? टू काउंटर द क्लेम्स ऑफ डार्क एजेस। जब कॉलोनियल हिस्टोरियंस विल से कि इंडिया में है ना रूलर्स क्या थे, दे वर बारबेरिक, ओके, दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग विथ अदर रिलीजियस ग्रुप्स, तो हम कहेंगे नो, दे वर रूलर्स लाइक रणजीत सिंह आल्सो हु नेवर डिस्क्रिमिनेटेड। मेरी बात समझ के? दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, लो रेट ऑफ लैंड रेवेन्यूज, अलग अलग पॉइंट्स हैं। समझ गया ना? केवल हिंट्स लिखवा रहा हूं, नाउ यू कैन रिलेट। स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, लो रेट ऑफ लैंड रेवेन्यूज, लो रेट ऑफ लैंड revenues, right. Next point, promoted trade and commerce and economic prosperity in the region. Promoted trade and commerce and economic prosperity in the region. Promoted trade and commerce and economic prosperity in the region. In the region. ठीक है, तो रणजीत सिंह की लीडरशिप में क्या हुआ? द सिख एम्पायर, ओके, was formed. Sikh groups were consolidated as, okay, you can say that a powerful, the mighty empire under the leadership of Ranjit Singh, and this treaty plays a very important role. अगर वो इस treaty के conditions को माने नहीं होते तो क्या हो जाता? शुरू में ही conflict हो जाता। Got it? I hope this part is clear. Okay.
But what we see here that at the time of end of his rule, that is 1838, 1839 mein he died. Okay, so right here that 1801 to 1839 is the time period. 1839 is the time period. 1809 is known for Treaty of Amritsar. We have already discussed Treaty of Amritsar. And here 1838 is known for a treaty, and that treaty is known as Tripartite Treaty. 1838 Tripartite Treaty. Okay, at the Tripartite Treaty देखो, तो इस treaty में there are three parties. That's why we are calling it Tripartite Treaty. There are three parties. Now who are these three parties in this treaty? This we need to understand. इस treaty में वो three parties कौन कौन से हैं? This we need to understand. There are three parties. Read the name of party. One party is EIC. The second party is Ranjit Singh. Ranjit Singh. One party was EIC. The second party was Ranjit Singh. And the third party was, right, Shah Suja. Shah Suja. Third party was Shah Suja. And who was Shah Suja? Read this. A claimant of throne. He was a claimant of throne. Claimant of throne. गद्दी का दावेदार था in Afghanistan region. He was a claimant of throne in Afghanistan region. Afghanistan region. And the story is very interesting. ठीक है, देखो क्या है, अब स्टोरी को रिलेट करो. This is India, and now this entire territory is controlled by whom? Ranjit Singh. ये पूरा का पूरा टेरिटरी कौन कंट्रोल कर रहा है? Ranjit Singh. And this entire territory which is controlled by Ranjit Singh is also serving as a powerful buffer. Powerful buffer का काम कर रहा है. Okay, powerful buffer for what? So powerful buffer to protect, okay, colonial interests of EIC. Colonial interests of EIC in India. तो अंग्रेजों ने ये बना लिया है बफर नंबर 1. दे हैव मेड हियर अ पावरफुल बफर नंबर 1. पावरफुल बफर नंबर 1. पहला बफर तैयार है, लेकिन अंग्रेज इससे भी संतुष्ट नहीं है. दे नीड वन मोर लेयर ऑफ बफर. एक और बफर चाहिए इनको, एंड दैट बफर विल बी अफगानिस्तान. ठीक है, इसमें तो देखो पंजाब इज देयर, अमृतसर इज देयर, लाहौर इज देयर, पेशावर इज देयर, कश्मीर इज देयर, मुल्तान is there, some part or some territories of Afghanistan is there. These all are the part of Ranjit Singh Empire. और रंजीत सिंह की आर्मी एशिया की सबसे बड़ी आर्मी है, दूसरी. तो क्या ये पावरफुल बफर है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? हाँ, ये पावरफुल बफर है. अब हम आते हैं अफगानिस्तान के बारे में. अफगानिस्तान टॉपिक वी विल डिस्कस इट सेपरेटली, बट हियर आई विल गिव यू अ रेफरेंस. अगेन दैट रेफरेंस वी विल यूज टू डिस्कस लेटर. अफगानिस्तान देखो, द EIC पॉलिसीज रिगार्डिंग अफगानिस्तान वॉज नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है, ये समय समय पे बदलता रहा, और वैसे अफगानिस्तान में किसी की भी पॉलिसी एक जैसी नहीं रही. ठीक है, USSR एंटर्ड, वापस चला गया, US एंटर, वापस चला गया. ठीक है, तो अफगानिस्तान को कोई समझ नहीं पाया, यहाँ तक कि अंग्रेजों की भी पॉलिसी वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म रही. ओके, दिस आई विल डिस्कस. ओके, तो यू कैन राइट दिस. ब्रिटिश पॉलिसी, एक हिंट लिख लो. ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स Afghanistan, was non-uniform policy. It was a non-uniform policy. It was a non-uniform policy. When we say non-uniform policy, it means the policy which kept on changing is non-uniform policy. जैसे British land revenue policies in India, it was uniform or non-uniform? Non-uniform. इजारेदारी, परमानेंट, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, जहाँ पे जिससे ज़्यादा पैसा आया बदल दिया पॉलिसी को. ठीक है, तो इट वाज नॉन यूनिफॉर्म. इन द सेम वे हियर द ब्रिटिश फॉलोड नॉन यूनिफॉर्म पॉलिसी. और इस नॉन यूनिफॉर्म पॉलिसी में क्या था?
So at some point of time they followed the policy of, okay, policy of non-intervention, policy of non-intervention, policy of limited intervention, limited intervention, ठीक है, पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन, पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन, फिर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, मतलब ये बदलता रहा, द पॉलिसीज केप्ट ऑन चेंजिंग, ठीक है. फॉर प्रीलिम्स यू विल रिमेंबर व्हाट, रिगार्डिंग अफगानिस्तान द ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी वाज नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, इट वाज नॉन यूनिफॉर्म, इट केप्ट ऑन चेंजिंग, ठीक है, इट नेवर वाज द सेम. दिस कैन बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, यहाँ पे मार्क कर लो, दिस कैन बी अ प्रीलिम्स स्टेटमेंट, प्रीलिम्स स्टेटमेंट, concept based questions in prelims. UPSC will generally ask this kind of question. Now what is the situation in Afghanistan? So in Afghanistan there was a ruler, ruler का नाम था दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, it was the name of the ruler, दोस्त मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान. और दोस्त मोहम्मद खान अंग्रेजों की बात को मानता था, बट अंग्रेज दोस्त नहीं थे, ठीक है, वो किसी के बारे में कभी भी अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते, ठीक है. तो दोस्त मोहम्मद खान, नाउ द अनदर पर्सन वांटेड टू बिकम द रूलर. दोस्त मोहम्मद खान वाज ऑलवेज ओबेइंग द ब्रिटिश. द अनदर क्लेमेंट ऑफ द थ्रोन वाज शाह सूजा, अनदर क्लेमेंट ऑफ द थ्रोन वाज शाह सूजा. दूसरा कौन था? शाह सूजा. शाह सूजा किसके पास आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. कहा यार हमें वहां पे रूलर बना दो अफगानिस्तान में. ईस्ट इंडिया कंपनी विल डू व्हाट? दे विल से ठीक है, वी विल मेक यू द रूलर, तुमको हम बना देंगे. इट मीन्स सीआईसी विल ट्राई टू मेक हियर व्हाट? पॉपेट रूलर, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज दोस्त मोहम्मद वाज ओबेइंग वॉट एवर ईस्ट इंडिया कंपनी सेड. इसके बावजूद भी दे वांटेड टू इंस्टॉल व्हाट? अ पॉपेट रूलर इन अफगानिस्तान, ठीक है. अफगानिस्तान में अमीर्स एक वर्ड यूज होता है, अमीर्स, अमीर्स ऑफ अफगानिस्तान, दोस्त अली एंड शाह सूजा. इसका मतलब ब्रिटिश भरोसेमंद किसी के नहीं, अवध के भी नहीं थे. 1765 में दोस्ती की, 1801 में जबरदस्ती सब्सिडी अलायंस किया, और 1856 में ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस उसको हड़प लिया. और कहते हैं हमें हड़पने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे. ओके, so these are the British people. Now the same is happening here. Now Shah Suja came to East India Company कि भाई help करो, support करो. Okay. Now how many parties are there? I have already discussed with you 3 parties. अब बताओ शाह सूजा की हेल्प करनी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी अफगानिस्तान में जाएगी कि नहीं? बताओ. जाएगी. ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी विल गो टू अफगानिस्तान. और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी अफगानिस्तान में जाएगी तो उसको पैसेज चाहिए कि नहीं? रास्ता चाहिए कि नहीं? पैसेज चाहिए, रास्ता चाहिए, यस. और वो रास्ता कहां से होके जाएगा? रंजीत सिंह के एम्पायर से होके जाएगा. गॉट इट? कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा है? यहां पे क्या होने वाला है? EIC want to bring Shah Suja as the puppet ruler in Afghanistan. For that they will do military intervention and they need a passage and they will use this passage, and for that Ranjit Singh will give his permission that yes आपकी आर्मी यहां से जा सकती है. अब क्या होगा रंजीत सिंह को, और क्या फायदा होगा? शाह सुजा विल से दैट I will accept your control over all the territories which you have previously annexed. मतलब आपने अफगानिस्तान की भी थोड़ी बहुत टेरिटरीज कैप्चर करी है, जितना भी सतलज के नॉर्थ में आपकी टेरिटरी है मैं उसको कभी चैलेंज नहीं करूंगा. आई विल एक्सेप्ट, आई विल वैलिडेट योर प्रेजेंस इन नॉर्थ ऑफ सतलज. क्योंकि झगड़ा हो सकता था कि नहीं? देखो सतलज रंजीत सिंह की टेरिटरी को पे क्लेम कौन कर सकता था? कौन फाइट कर सकता था? अफगानिस्तान. नाउ व्हाट शाह सुजा इज सेइंग दैट आई विल नॉट क्लेम, I will give my acceptance for your territory. So this will validate the presence of Ranjit Singh in north of Satluj. तो रंजीत सिंह को इससे ये फायदा होने वाला है. पूरी स्टोरी समझ में आ गई आपको? ट्राइपार्टाइट, ठीक है.
और बेसिकली ब्रिटिश क्या करना चाहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर इंटरवीनिंग इन अफगानिस्तान दे वांट टू मेक अफगानिस्तान बफर नंबर 2, दूसरा पावरफुल बफर, जिससे फ्यूचर रशियन इन्वेजन्स को क्या किया जा सके, सो दैट द फ्यूचर रशियन इन्वेजन्स कुड बी स्टॉप्ड। तो क्या बफर पॉलिसी कभी खत्म हुई? नहीं, कभी नहीं खत्म हुई, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। बट द बुक्स राइट की ये वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ आया और खत्म हो गया, बट टेक्निकली ये नहीं खत्म हो रहा है। ब्रिटिश विल नेवर end this policy. This was very important for them. So right here, there are three parties here. Right, this East India Company. Right, this East India Company asked for a passage from Ranjit Singh's territory. EIC asked for a passage. EIC ने एक रास्ता मांगा from Ranjit Singh's territory to enter Afghanistan. To enter Afghanistan, asked for a passage from Ranjit Singh's territory to enter Afghanistan. Okay, अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए पैसेज मांगा। एरो मार्क दे के लिख लो रीजन क्या था, राइट, मिलिट्री इंटरवेंशन, टू डू मिलिट्री इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान टू मेक शाह सुजा एज द रूलर, टू डू मिलिट्री इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान टू मेक शाह सुजा एज द रूलर। मोटिव क्या था? शाह सुजा को रूलर बनाना। The second party which was involved in this treaty is Ranjit Singh. So right, point number 1, Ranjit Singh gave the permission. Ranjit Singh gave the permission. Ranjit Singh gave the permission. And point number 2, okay, Ranjit Singh gave the permission. Now the third party is Shah Suja. Right, Shah Suja. Shah Suja promised that he will accept and validate all the territorial possessions of Ranjit Singh. He will accept and validate all the territorial possessions of Ranjit Singh. He will accept and validate all the territorial possessions of Ranjit Singh. He will accept and validate all the territorial possessions of Ranjit Singh to the north of Satluj. To the north of Satluj. मेरी बात समझ गया? Is this concept clear? Tripartite treaty and Treaty of Amritsar. Clear? Now one thing. Prelims में क्या होता? कुछ टेक्निकल चीजें पूछ लेते. That who was the EIC's गवर्नर और वायसराय एट दिस टाइम. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वायसराय कौन था. बेसिकली नॉट वायसराय, वायसराय 1858 के बाद आता है, तो गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था. सो द नेम इज लॉर्ड ऑकलैंड. वेरी इंपॉर्टेंट नेम, राइट दिस, लॉर्ड ऑकलैंड. ये है टेक्निकल चीज है. द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, बट इफ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, सो हु वाज द गवर्नर जनरल at that time? So the answer is Lord Auckland. ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड. तो 1836 से लेकर 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड रहा. 1836 टू 1842. ठीक है. अच्छा, एक और बात बता रहा हूं, हालांकि ये टॉपिक आगे आएगा. देखो, ब्रिटिश फॉट 3 वॉर्स विद अफगानिस्तान, दैट इज नोन एज एंग्लो अफगान वॉर्स. पहला वॉर जो हुआ था उसका ईयर है 1839 टू 1842. इसका मतलब ये जो ट्रीटी में जो कुछ हो रहा है, ये रीजन बनेगा किस चीज का? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का. तो आई विल डिस्कस इट लेटर, बट इन अ बॉक्स यू कैन राइट दिस फैक्ट. दिस इज अ फैक्ट शीट. अगेन वी विल यूज दिस. इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. दैट इज एंग्लो अफगान वॉर्स. एंग्लो अफगान वॉर्स, टोटल 3 वॉर्स वेर फॉट. टोटल 3 वॉर्स वेर फॉट. पहला था फ्रॉम 1839 टू 1842. दिस इज द फर्स्ट वॉर. द सेकेंड वॉज 1878 टू 1880 एंड द थर्ड वॉज 1919. ठीक है.
third was 1919. And what is to be related here? क्या रिलेट करना कर लेना है हमें यहाँ पे? तो देखो, when I will discuss first Anglo-Afghan war, again I will discuss tripartite treaty that was signed in 1838. ओके, ये इवेंट जाके जुड़ जाएगा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर से, तो कनेक्ट करिए इसको. दिस इवेंट विल फर्दर बी रिलेटेड टू द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर. It will be related to the first Anglo-Afghan war. Okay, right? Now Ranjit Singh died in which year? 1839. Next year, what we see here? That the Ranjit Singh died. So write this: 1839. Ranjit Singh died. Ranjit Singh died. Okay. 1839. Ranjit Singh died. Now, read this: political conditions after death of Ranjit Singh after 1839. Political conditions or situations or scenarios after 1839. Political conditions or the political situations or scenarios after 1839. After 1839. ठीक है. तो देखो, जब भी एक पावरफुल रूलर की डेथ होगी और उसके बाद सक्सेसर्स वीक होंगे, तो द स्टेट विल सफर द चैलेंजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन. और डिसइंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा? वेरियस सिख chiefs will start declaring their independence. This will happen. So read this point, that after Ranjit Singh, the process of decline and disintegration of Sikh Empire started. After Ranjit Singh, the process of decline and disintegration of empire started. Process of decline and disintegration of, okay, started. Right, next point, fight for or succession disputes started. Succession disputes started. Succession disputes started. Okay. Court conspiracies will increase. Court conspiracies will increase. Court conspiracies will increase. यहाँ पे बहुत सारे political details हैं कि शेर सिंह, दलीप सिंह, they were the sons of Ranjit Singh. First Sher Shah was killed, then Dalip Singh becomes the ruler, then Rani Jindan becomes the regent of Dalip Singh. तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है. दिस मच इज क्लियर. ठीक है कि क्या होगा? फाइट फॉर सक्सेशन विल स्टार्ट. और क्या होगा? सेकेंड पॉइंट इज, ओके, राइट, वन मोर पॉइंट, दैट डिफरेंट सिख सरदार्स will start asserting their independence. Different Sikh sardars will start asserting their independence. ठीक है, will start asserting their independence. Now tell me, in this situation, what is happening? The powerful buffer of East India Company is being compromised or not? East India Company को यहाँ क्या चाहिए था? Powerful buffer. And कौन दे रहा था पावरफुल बफर ईस्ट इंडिया कंपनी को? इट वॉज रणजीत सिंह. नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह, दिस पावरफुल बफर इज बिकमिंग वीकर, एंड दिस इज हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनीज, ओके, सिक्योरिटी इंटरेस्ट विल बी अफेक्टेड. उनको वीकर बफर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पावरफुल बफर. अच्छा बताओ, जब बफर वीक होगा तो वो क्या करेंगे? खुद ही पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेंगे. मेरी बात समझ गया ना? So why British fought Anglo-Sikh wars? This is the reason. Okay, so right now, write this point, that now the powerful buffer was becoming weaker day by day. The powerful buffer was becoming weaker day by day. Powerful buffer was becoming weaker. It was getting weaker day by day. Okay, read this. And this was also like a threat for the East India Company. This was also like a threat for East India Company. Weaker buffer is like a threat for the East India Company.
for the East India Company. So read this. In this situation, EIC will fight two wars with Sikh, two wars with Sikh. Okay, one war was fought here in 1845 to 46. First war was fought, and the second war was fought in this year, that is 1848 to 49. This is called First Anglo-Sikh War, and this is called Second Anglo-Sikh War. Two wars were fought, First Anglo-Sikh War and Second Anglo-Sikh War. Two wars were fought. ठीक है. अच्छा देखो, जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हो रहा है तो यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन आ गया है बनकर? लॉर्ड डलहौजी. और लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या है? 1848 टू 1856. ठीक है, 1848 टू 56 इवेंट से रिलेट करना है गवर्नर जनरल वायसराय. ठीक है ना, 1846. और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? He followed which kind of policy? Aggressive policy. For what? Annexation of states. उसने कहा कि यार ये इनडायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए. ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट्स. EIC should establish direct control over the states. So he was in the favor of what? Direct control or complete control, or to ensure complete subjugation of states. पूरी तरह से जीत लेना चाहता था. And here what happened? Okay, now Sikh Empire became a part of British Indian Empire. Okay, here the Sikh power was defeated. In these two wars, Sikh power were defeated. And okay, Sikh power will become a part of British Indian Empire. लेकिन फिर से एक बात बता रहा हूं आपको, ब्रिटिश वेर वेरी डिप्लोमेटिक. उनको पता था कि लोगों को कंफ्यूज करना पड़ेगा. कंफ्यूज करना जरूरी है क्योंकि सिख वैसे भी ऐसे लोग हैं जो ज्यादा यूनाइटेड है. अगर नाराज वराज हो गए तो नुकसान हो जाएगा. दे विल टेक अ वेरी स्मार्ट डिसीजन. देखो क्या करते वो. ओके, दे विल से, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल से दैट जो पंजाब है, पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है. और उनका क्या टारगेट है कि दे वांट टू प्रोजेक्ट देयर इमेज एज लिबरेटर्स और कॉलोनाइजर्स. लिबरेटर वो कहते हैं हम आपकी सेवा के लिए आए भाई, वी आर द लिबरेटर्स. तो देखो, दे ऑलवेज ट्राई टू प्रेजेंट देयर पिक्चर एट द लिबरेटर्स. यही तो डिप्लोमेसी है कंपनी की. ठीक है, वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है. और इस एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए ब्रिटिश डिड व्हाट? दे मेड अ 3-member काउंसिल. के लिए क्या बना दिया? 3-member काउंसिल. ओके, टू लुक आफ्टर दिस टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. 3-member काउंसिल बना दिया. ठीक है, इस काउंसिल में 3 मेंबर्स कौन से थे? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. 2 तो सगे भाई थे, लॉरेंस ब्रदर्स, हेनरी लॉरेंस एंड जॉन लॉरेंस. ठीक है ना, तो ये 2 सगे भाई थे, हेनरी लॉरेंस एंड जॉन लॉरेंस. लॉरेंस ब्रदर्स, जॉन लॉरेंस. ओके, प्लस देयर वाज वन मोर पर्सन, दैट इज चार्ल्स मॉसेल. ओके, चार्ल्स मॉसेल. So there are 3 persons: Henry Lawrence, John Lawrence and Charles Mosel. This is a 3-member council, and this council will do what? This will govern Punjab and nearby territories. So this is a governing body. देखो, Second Anglo-Sikh War ended in which year? 1849. It means that this governing body will govern Punjab from 1849. ये 1849 से गवर्न करेगी. तो लोगों को ये मैसेज दिया कि भाई पंजाब में इतनी प्रॉब्लम है, अनरेस्ट है, और उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया.
उसके बाद क्या करेंगे, इन 1853 read this system was ended, this system was ended 1853 में इस सिस्टम को खत्म कर देंगे, एंड देन ओके दे विल डू व्हाट, दे विल ब्रिंग वन चीफ कमिश्नर, वन चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर टू गवर्न पंजाब, टू गवर्न पंजाब। एक चीफ कमिश्नर लेके आएंगे पंजाब को गवर्न करने के लिए, एंड द नेम ऑफ दिस चीफ कमिश्नर इज, अब यहीं पे ये बेचारा, इसका प्रमोशन हो जाएगा, जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, a chief commissioner to govern Punjab. Now I am asking you one question, that it is what, decentralization of power or centralization of power? हाँ, centralization. ध्यान से समझो इस बात को. Here in governing council there are how many members? फैक्ट्स के बियॉन्ड भी एक स्टोरी होती है, उसको समझो. इन गवर्निंग काउंसिल देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स? 3 members. Now who will govern? John Lawrence. How many member? 1 member. This is what? EIC is moving towards centralization of power. अच्छा एक बात बताओ, when East India Company rule was ended in 1858 and Crown rule came, this is what? Centralization of power or decentralization of power? Centralization of power. तो लोगों को ये लगता है कि 1858 में एक झटके से कंपनी का रूल क्राउन ने खत्म कर दिया. नहीं, क्राउन वाज मेकिंग प्लान्स for the last more than 50 years that how to centralize all the powers in the hands of the British government. कैसे सारे के सारे पावर्स को क्या करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में सेंट्रलाइज करना है. मेरी बात समझ गया ना? नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इन 1858, व्हाट विल हैपन 1858 में क्या होगा? EIC रूल वाज ended. Now direct British crown rule will come, and now Punjab will become what? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस. अब ये ब्रिटेन की सरकार के सीधे सीधे है ना, उसमें आ जाएगा. दिस विल बिकम अ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस. अ पावरफुल टेरिटरी नाउ विल बिकम अ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस. मेरी बात समझ गया? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखा, इंडियंस के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा? मेरी बात समझ गया ना? पावरफुल बफर से किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट. दिस इज कॉलोनियलिज्म. कॉलोनी मीन्स व्हेन ब्रिटेन विल रूल अ कॉलोनी लाइक इंडिया. In India, whatever the administrative system and practices they will design, whatever the policies they will introduce here, the ultimate objective of all these policies will be to ensure the interests and economic gains of the British government, not for Indian people, but they will try to project it that we are doing all this for the benefit of Indians. They will try to project that we are the liberators. वो इस बात को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे. मेरी बात समझ में आई आपको? तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ इफ यू लुक एट दिस स्लाइड, ओके, यू विल फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरीज ऑफ द सिख एम्पायर. ठीक है, ओके. ट्रीटी ऑफ अमृतसर आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, that the Treaty of Amritsar of 1809, okay, एक बार रिवाइज कर लो, was an agreement between British East India Company and Ranjit Singh. Ranjit Singh was the Sikh leader who founded what? The Sikh Empire. Is it clear? Now EIC's intention of this treaty was what? To gain Ranjit Singh's support if the French invaded India. यहाँ पे क्या है? रशियन इन्वेजन भी है, ये ज्यादा बड़ा थ्रेट था. Okay, and intention was to further consolidate his territorial gains to the south of the Satluj after establishing the river as the respective border. ठीक है, north of the Satluj. ठीक है, इसके बाद आते हैं इस मैप पे. ये देखो क्या है. Here in this map you see what?
This is the territorial boundary or the area that was controlled by the Sikh power in India. ठीक है? Sikh were controlling all these territorial boundaries in India. Now tell me, will this serve the purpose of a powerful buffer or not? Yes. If here you see a powerful ruler like Ranjit Singh, so definitely this will serve the purpose of a powerful buffer. Now, why British? Now, the British will not only intervene in Sikh state, but you will see that the British will also intervene in Sindh. Again, this is an important area of prelims question. Sindh policy, okay? Sindh. They will also interfere in Sindh, because interference in Sindh will do what? This will also serve the purpose of powerful buffer number 2. तो यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे. और देखो PYQ उठा के देखो, क्वेश्चन आए हैं. सिंध पॉलिसी, अफगानिस्तान पॉलिसी, पंजाब पॉलिसी, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है. नाउ लुक एट द थर्ड area here that is controlled by the Sikh. Sorry, this third area is what? Afghanistan. Third area क्या है? Afghanistan. Afghanistan. Afghanistan in north. Now this will serve the role of buffer zone number 3. Buffer zone number 3. So British were very smart. They were making these powerful buffers to protect their most profitable colonial interests in India. इंडिया के अंदर. ठीक है, अपने मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉलोनियल इंटरेस्ट को वो इंश्योर कर रहे हैं. नाउ लुक एट दीज पिंक कलर्ड टेरिटरीज. दीज हैज ऑलरेडी बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ये पहले से ही ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन चुका है. ऑल दीज टेरिटरीज, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस बंगाल रीजन, ओके, दिस ऑल हैज बीन पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. पहले से ब्रिटिश इस सारे एरिया को क्या कर चुके थे? दे हैव ऑलरेडी कॉन्क्वर्ड. ओके, तो अब तक इनके कंट्रोल में क्या है? ये सारी एरियाज हैं. लुक एट दिस इज ईयर 1805. रणजीत सिंह का टाइम आते आते ये सारा एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में है. दिस ऑल एरिया इज ब्रिटिश टेरिटरी. ये ब्रिटिश टेरिटरी था. And these, for example, there are some territories here. Again, I am marking it in some different colors. Okay, these territories, like, okay, this territory, this territory, this territory, Travancore state, this smaller territory, this territory. All these territories were what? Protected states of British. ये क्या थे? Protected states. ये सारा पिंक कलर्ड ब्लू मार्क्ड एरिया, दिस वेयर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश. ओके, एंड हियर व्हाट दे आर डूइंग? दे आर मेकिंग पावरफुल बफर. सिख एरिया को वो क्या कर रहे हैं? पावरफुल बफर बना रहे हैं. सिंध दे आर मेकिंग व्हाट? पावरफुल बफर. अफगानिस्तान दे आर इंटरफेयरिंग because they want to use Afghanistan as the powerful buffer. Now this is the Satluj river which I was discussing with you. So Ranjit Singh was free to extend his territorial boundaries or control where? To the north of Satluj. जितना आगे जा सकते थे जाओ. But to the south of Satluj he was restricted to do so. अगर वो ऐसा करते तो British will fight with Ranjit Singh. Ranjit Singh decided to sign this treaty of Amritsar 1809. ठीक है, Satluj river was taken as the boundary. Okay, and Ranjit Singh consolidated his empire to the north of Satluj. North of Satluj, he consolidated his empire. ठीक है, 1809 is the year, and at this time, this is the territory that was controlled by Ranjit Singh. After 1809, Ranjit Singh will do what? Ranjit Singh will conquer new territories. Like he will conquer Peshawar also. He will conquer Kashmir also. ये area भी conquer कर लेंगे. He will also conquer some parts of Afghanistan region. So this all was possible due to 1809 Treaty of Amritsar. So this was like a diplomatic realism for the Ranjit Singh. And this was the area that was controlled by Ranjit Singh at the time of his death. He is also known as Sher-e-Punjab. Why Sher-e-Punjab? Because he laid the foundation of a powerful empire, right? And this entire area that is ruled by Ranjit Singh
was also known as Sarkar e Khalsa. This simply means what? We are talking about the Sikh Empire or the Sikh territories. We are simply talking about the Sikh Empire or the Sikh territories. Got it? ये पूरा concept clear हुआ? Obviously we are taking time. I know this, that we are taking time, but if we will not spend time here, you will have to read books. Okay, वो करना ही पड़ेगा. You cannot skip that. स्किप करके नहीं जा सकते. सो इट्स बेटर, ठीक है, कि पूरी तरह से तैयार होकर एग्जाम में जाओ. ठीक है, फिर ये डर नहीं रहेगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं. आएंगे तो सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं. वॉट एवर यू आर लर्निंग यू विल बी एबल टू रिलेट द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ये ध्यान रखना है. तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस विथ यू अदर स्टेट्स, मीन्स स्मॉलर स्टेट्स लाइक नहीं, इसके बाद सिंध एंड अफगानिस्तान at the same time I will discuss. ठीक है ना? What was the issue in Sindh, because there are questions in prelims also. Afghanistan, then I will discuss other states like Travancore and all this. After this I will discuss the policies of annexation of states. Okay, different policies, and then we will discuss, we will debate 18th century India. Okay, and after this we will enter into the next chapter, and from that part history will be very much interesting. जैसे ही मैं इकोनॉमिक हिस्ट्री में एंटर करूंगा, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री में एंटर करूंगा, राइट, रिवोल्ट रिबेलियंस में एंटर करूंगा, नेशनल मूवमेंट में एंटर करूंगा. सो द हिस्ट्री विल बी लाइक अ फिल्म. तो ये हिस्सा थोड़ा बोरिंग था, बट इट वाज वेरी मच क्रूशियल फॉर योर एग्जाम. ठीक है, ये बोरिंग था तो ऐसा था, जो इंटरेस्टिंग होगा वो कैसा होगा. ठीक है, जस्ट इमेजिन, राइट. तो अब मिलते हैं दूसरी क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री में. अच्छा, वो जो एक्सक्लूसिव सेशन मैंने लिया था, आप में से कुछ लोगों ने वीडियो देखा, वॉज इट हेल्पफुल? ठीक है, बीच बीच में ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं. जैसे मैंने सोचा कि आई विल सेलेक्ट दोज टॉपिक्स विच आर क्रूशियल फ्रॉम वेयर यू कैन गेट क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स आल्सो. ठीक है, so I will choose those areas and will make videos on them, those topics. For example, the next video that I will record will be integration of princely states. ठीक है, what role was played by Patel, what were the challenges in Kashmir and all this. So if possible, okay, you may join live. ठीक है, वो तो recorded जाता है, but live में रहोगे तो you can ask your doubts. So that is a very good thing. तो आपका concentration level थोड़ा अलग रहेगा when you will attend it live. So I will send the message. Generally, I will record those exclusive videos in Saturday and Sunday. Okay. So from this week, on Saturday, I will record one video, and on Sunday, I will pick any topic from ancient India and will record. Okay. For example, most probably in ancient India, I will select a topic that will be sources of history. Okay. And from where you can get a lot of question in prelims. ठीक है ना? तो मेरा focus थोड़ा यहाँ भी है कि ऐसे topic उठाऊं जहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाए, राइट. ओके, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम.